Cards? Somebody plays cards, please. Cards. Jai Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Gopirana Balaba Vivaranari Yasodhanandana Brajarana Randana Yasodhanandana Brajarana Randana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama Hare Hare Krishna 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 Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. Come on, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. Hare Hare, Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Rama, Hare Hare. Hare Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Rama, Sita Gaur, the Prabhupada ki jai. Okay. You bring your glass. My glass. My glass. You know the one that goes like this. So in something was there, that's why I not got that. Hmm? So in room something, some other thing was there. So that's why I not got that. What verse? Say, unexpected. Yes, sir. What verse is this? 44. 44. Okay. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Shishuko Vacha. Pratijagraha Tad Badham. Narada Sadhu Samataha. Itavan Sadhu Vasohi. Itavan Sadhu Vadohi. Itikse Tasvaraha Swayam. Visuga Vacha. Pratijagraha Tad Badham. Narada Sadhu Samataha. Itavan Sadhu Vadohi. Titikset Tasvara Swayam. Shishuko Vacha. Pratijagraha Tad Badham. Narada Sadhu Samataha. Itavan Sadhu Vadohi. Titikset Tasvara Swayam. Sri
Good job here. Lady, Mataji. श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा स्वीकार किया वह तथास्तु नारद मुनि साधु संपत जो माने हुए साधु है साधुवाद साधु पुरुष के अनुकूल ही निस्संदेह दीक्षेत वह सहन कर सके ईश्वर यद्यपि प्रजापति दक्ष को श्राप देने में समर्थ है स्वयं अनुवाद से श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद महाराज की जय। अनुवाद श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, चूंकि नारद मुनि माने हुए साधु पुरुष हैं, अतः जब प्रजापति दक्ष ने उन्हें श्राप दिया तो उन्होंने उत्तर दिया तद्वारा कि तुमने जो भी कहा है उत्तम, मैं इस श्राप को स्वीकार करता हूं। वे चाहते तो उलट कर प्रजापति दक्ष को श्राप दे सकते थे, किंतु उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि वे सहिष्णु तथा दयालु साधु थे। तात्पर्य जैसा कि श्रीमद् भागवत के तीसरे स्कंद 25वें अध्याय 21 में कहा गया है, प्रतीक्षस्व कामिका सुनिद सर्वदेहिना अजातशत्रु शांता साधु साधु भूषण। साधु का लक्षण है कि वो सहिष्णु दयालु तथा सभी जीवों के प्रति मैत्रीपूर्ण होता है, उसका कोई शत्रु नहीं होता, वो शांत होता है, वो शास्त्रों का पालन करता है और उसके सारे गुण उदात्त होते हैं। क्योंकि नारद मुनि सर्वाधिक उच्च साधु या बंधु है, अतः उन्होंने प्रजापति दक्ष का उद्धार करने के हेतु उस शाप को मौन भाव से सह लिया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने सारे भक्तों को इसी सिद्धांत की शिक्षा दी है। मनुष्य को चाहिए कि अपने को रास्ते या तिनके से तुच्छ समझकर मन में विनम्र भाव से भगवान पवित्र नाम की कीर्तन करे। उसे वृक्ष से भी अधिक सहनशील होना चाहिए, मिथ्या प्रतिष्ठा के भाव से रहित होना चाहिए, दूसरों को आदर देने के लिए तैयार रहना चाहिए। ऐसी मनोदशा में वह भगवान के पवित्र नाम का निरंतर कीर्तन कर सकता है। जो व्यक्ति श्री चैतन्य महाप्रभु के आदेशों का पालन करते हुए संसार भर में या सारे ब्रह्मांड में भगवान की महिमा का प्रचार करता है, उसे घास या तिनके से भी अधिक विनम्र तथा वृक्ष से भी अधिक सहनशील होना चाहिए, क्योंकि प्रचारक आराम देह जीवन की बता सकता है। निस्संदेह प्रचारक को अनेक अवरोधों का सामना करना पड़ता है। वह कभी कभी न केवल शापित होता है
पृथु उसे शारीरिक चोटें भी सहनी पड़ी। उदाहरण, जब नित्यानंद प्रभु जगाईता मथाई नामक दो कुछ के भाइयों के पास कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने गए तो उन्होंने उन्हें चोट पहुंचाई, जिससे उनके शरीर से खून बहने लगा था। फिर भी उन्होंने सहिष्णुतापूर्वक उन दोनों उच्चकों को का उद्धार किया, जिससे पूर्ण वैष्णव बन गए। प्रचारक का यही कर्तव्य है। जीसस क्राइस्ट को तो सूली पर भी चढ़ना पड़ा था, अतः नारद मुनि को दिया गया श्राप अधिक आश्चर्यजनक नहीं था और उन्होंने उसे सह लिया। अब यह पूछा जा सकता है कि नारद मुनि प्रजापति दक्ष के सम्मुख क्यों रुके रहे और उनके सारे दोषारोपों तथा श्रापों को सहते रहे? क्या यह दक्ष के उद्धार के लिए था? उत्तर है हाँ। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि प्रजापति दक्ष द्वारा अपमानित होने के बाद नारद मुनि को वहां से तुरंत चले जाना चाहिए था, किंतु वे जानबूझकर दक्ष कटु शब्दों को सुनने के लिए रुके रहे, जिससे दक्ष का क्रोध शांत हो जाए। प्रजापति दक्ष कोई सामान्य व्यक्ति न थे, उन्होंने अनेक पुण्य कर्मों के फल संचित कर रखे थे। इसलिए नारद मुनि को आशा थी कि श्राप देने के बाद दक्ष तुष्ट होकर क्रोध से मुक्त होकर अपने दुर्व्यवहार के लिए पश्चाताप करेंगे और इस तरह वैष्णव बनने का अवसर प्राप्त करेंगे, तब उनका उद्धार हो सकेगा। जब जगाईता मथाई ने नित्यानंद का अपमान किया तो नित्यानंद सहनशील बनकर खड़े रहे, इसीलिए दोनों भाई उनके चरणों पर गिर पड़े और उन्होंने पश्चाताप किया। फलस्वरूप बाद में वे पूर्ण वैष्णव बन गए। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के स्कंद के अंतर्गत प्रजापति दक्ष द्वारा नारद मुनि को श्राप नामक 5वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। प्रभुपाद महाराज की ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदामयं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापरकमलं श्रीगुरून् वैष्णवं श्रीरूपं सगद्जातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सवधूतपायजनं साहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदां सहगणा लालिता श्रीविजयकान्वितं हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपिश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमनीय हरिप्रिये। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां वैष्णवेभ्यो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवल्लभ गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। So, Sri Sukadeva Goswami continued, my dear king, since Narada Muni is an improved saintly person, approved saintly person, when cursed by Prajapati Daksha, he replied, Tad Bharam, yes, what you said is good. I accept this curse. He could have cursed Prajapati Daksha in return, but because he is tolerant and merciful, he took no action. श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि राजू चूंकि नारद मुनि माने के साधु पुरुष हैं, अतः जब प्रजापति दक्ष ने उन्हें श्राप दिया तो उन्होंने उत्तर दिया तब बाण, ठीक तुमने जो भी कहा है उत्तम है। मैं इस श्राप को स्वीकार करता हूँ। तो चाहते तो उलट कर प्रजापति दक्ष को श्राप दे सकते थे, किंतु उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की क्योंकि वे सहिष्णु तथा दयालु साधु हैं। So we can see this in the example of Srila Prabhupada also. हम देख सकते हैं प्रभुपाद जी के उदाहरण से He was very tolerant. प्रभुपाद जी बहुत सहनशील थे। I mean, in the beginning, when he came to start this movement in 2nd Avenue in New York, he had to stand in line for the shower. He would not complain. He would stand in line, so many people in front of him, and none of them had enough sense to let Prabhupada take shower first. तो प्रभुपाद जी जब 2nd एवेन्यू न्यूयॉर्क में जब शुरुआत की तो बहुत सहनशील थे और वो कतार में रहते थे, किसी को ये ज्ञान भी नहीं था कि इनको पहले जाना चाहिए। I mean, is there anybody in all of India who wouldn't let a saintly person
take shower first? Is there anybody? तो ये भारत में ऐसा तो होगा ही, जैसे किसी को स्नान करना है, अगर कोई संत पुरुष है तो पहले उसको मौका दे देंगे। Maybe some tribal people. हाँ, हो सकता है अगर कोई But- आदिवासी लोग ऐसा ना करें। Maybe, some mountain people. हाँ, जो पर्वत में रहते हैं या आदिवासी इत्यादि, वही इसका। But everybody, if they call it as common sense, if there's a highly older, particularly even just older personality, और सबका एक साधक बुद्धि तो होना चाहिए कि एक वृद्ध व्यक्ति, we let him go first. पहले इनको जाने दिया जाए। Who would stand in front of his grandfather to take a shower? कौन अपने दादा के सामने खड़ा होकर पहले खुद स्नान करने के लिए जाएगा? Who would not let his father first to take a shower? कौन अपने पिताजी को मौका नहीं देगा पहले जाने के लिए? It is common sense. ये तो साधारण बुद्धि है। But in the West, common sense is not very common. और पश्चिम देश में ये साधारण बुद्धि बहुत ही साधारण नहीं है, As Srila Prabhupada told us. जैसे श्रील प्रभुपाद ने So कहा। Prabhupada said, how dare you, I'm the guru, you let me stand in line. कैसे आप अपने गुरु को लाइन में खड़ा कर दिए हो? No, he didn't say anything. लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। And so gradually, Super Soul told him, come on, you can't do that. तो उनके परमात्मा ने उन्हें दिल में प्रेरित किया कि वो कुछ न करें। Prabhupada waited many times for the Super Soul. Prabhupada waited many times for the Super Soul to say something. प्रभुपाद जी ने बहुत प्रतीक्षा किया कि परमात्मा कुछ कहे उनको। There was a situation, some complicated managerial, बहुत बार yes, there was a complicated material situation in ISKCON. एक बार कृष्ण भावनानंद आंदोलन में काफी जटिल समस्या था, And Prabhupada assembled all the big men और प्रभुपाद जी कुछ महत्वपूर्ण भक्तों से मिलना चाहते थे, yes, and he asked them, what shall we do about this? और उन्होंने पूछा हमें क्या करना चाहिए इस बारे में। So Tamar Krishna Goswami, what is your opinion? और तमाम कृष्ण गोस्वामी, What is your opinion? तमाम कृष्ण गोस्वामी बोले, And Tamar Krishna Goswami said, well, I think Srila Prabhupada, we should do this and that. उन्होंने कहा प्रभुपाद जी हमें ऐसा ये सब करना चाहिए। It was good, but Prabhupada said, it's not a good idea. तो प्रभुपाद जी ने बोला ये सही ठीक है, लेकिन उतना अच्छा आइडिया नहीं। Giriraj Swami, what is your idea? उन्होंने कहा कि गिरिराज महाराज आपने कहते हैं, And he spoke. और उन्होंने कहा, And Prabhupada said, no, not a good idea. तो प्रभुपाद जी ने सुना, लेकिन उन्होंने ये भी सही। Jagadish Maharaj, Brahmananda, there were so many, he asked, what is your idea? जगदीश महाराज, ब्रह्मानंद महाराज ये सब बोले, And every time Prabhupada said, not a good idea. प्रभुपाद जी ने हर बार नॉट ए गुड आइडिया या ठीक चीज नहीं है। The finger went around, जब सब लोगों ने कह दिया, everybody spoke, सबने बोल लिया, and Prabhupada always said, it's not a good idea. तो प्रभुपाद जी ने हर बार उन्हें नॉट बोली ये सही आइडिया नहीं है। And Tamar Krishna Goswami said, but Srila Prabhupada, what is your idea? तो तुम्हारे कृष्ण महाराज ने कहा प्रभुपाद जी को आपका क्या आइडिया है? And Prabhupada said, I don't have an idea, that's why I'm asking you. प्रभुपाद जी ने कहा मेरे पास कोई आइडिया नहीं, इसीलिए मैं तो आपसे पूछ He was hoping that somebody came forward with something good, but it was not so he said, I don't have an idea, let's wait what Krishna says. तो उन्होंने बोला मेरे पास कोई आइडिया नहीं है, तो मैं हम सब कृष्ण का प्रतीक्षा करना चाहिए। So they talked about something else. तो उन्होंने फिर कुछ और चर्चा कर So दी। after half an hour, Prabhupada said, now I know what to do. उन्हें आधा घंटे बाद उन्होंने कहा तो प्रभुपाद जी ने कि अब मुझे पता क्या करना है। And he gave this very wonderful explanation or interpretation of the situation. और उन्होंने बहुत ही सुंदरता से इसकी व्याख्या की कि क्या सिचुएशन था उसका। The perfect answer. तो उन्होंने एकदम पूर्ण उत्तर दिया। Tamar Krishna Goswami said, Srila Prabhupada, where did you get this idea from? हमारे कृष्ण महाराज ने पूछा आपको ये आइडिया कहाँ से आया? So his Prabhupada said, I simply waited for Krishna. तो प्रभुपाद जी ने कहा मैंने सिर्फ कृष्ण की प्रतीक्षा की। So this idea to wait for Krishna is a very important ingredient of our devotional life. हमारे भक्ति में ये
बहुत महत्वपूर्ण है। Sometimes we don't know what to do. तो बहुत बार हमें पता नहीं रहता क्या करना चाहिए। You may go to somewhere, somebody may ask me, what shall I do in this situation? I'm so confused. बहुत बार लोग पूछेंगे कि हमें इस स्थिति में क्या करना चाहिए। मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। Why are people confused? Why are people confused? क्यों लोग कंफ्यूज हैं? Because they try to make a decision when they're not clear. They क्योंकि may, वो ऐसी स्थिति बना रहे हैं जहाँ पे उनका क्लियर नहीं है। you become confused. If you're in the forest, जैसे जंगल में, it's pitch dark, वो में अंधकार है, it's at night, रात्रि है, and you try to make a decision. Maybe I should go here, maybe I should go this way, that way. You become confused. तो जंगल में रात्रि में आप इधर जाओगे, इधर जाओगे, उधर जाओगे, पूरा का पूरा अंधकार है। So what you have to do? तो क्या करना चाहिए? You have to wait till the sun rises, and then here's the road and there's the ditch. तो तब जब आपको प्रकाश का प्रतीक्षा करना है और तब क्या करना है, तब आप देख सकते हैं किधर रास्ता है, किधर गड्ढा है। So Prabhupada told us many times, do not buy uncertainty. If something is uncertain, do not go into this direction. प्रभुपाद जी ने बहुत बार हम सबको कहा कि अनिश्चित जगह पे जाना नहीं, अनिश्चित कार्य नहीं करना। Try to find some answer, either from someone or just wait for Krishna. तो प्रयास कीजिए कहीं से उत्तर प्राप्त करने के लिए या कृष्ण की प्रतीक्षा कीजिए। Prabhupada understood that Krishna can speak through everyone. और कृष्ण किसी न किसी के द्वारा प्रकाशित करते हैं। In all activities, depend on me and work always under my protection, Krishna says. कृष्ण कहते हैं आप मेरे ऊपर पूरी तरह निर्भर रहो ताकि मैं आपका सही से मार्गदर्शन कर सकूं। If you do so, then you become conscious of me. जब आप ऐसी तरह करोगे तब भगवान की चेतना को आप प्राप्त करोगे। So if we work in dependence on Krishna, then Krishna will come out after some. He will tell us. जब आप कृष्ण के पचिनों में चलोगे, बताए गए पचिनों में, तब कृष्ण आपको मार्गदर्शन करेंगे। And then you can cross over all difficulties of material life by Krishna's grace. तब कृष्ण की कृपा से आप भौतिक संसार के सब कष्टों से पार हो जाओगे। Rather, I want to do this, I want to do that, I want to go here, I want to go there. This is material consciousness. और मैं ये करना चाहता हूँ, वो करना चाहता हूँ, ये भौतिक चेतना है। Maybe, हो सकता है, could be, हो सकता है, or not. नहीं, Material life. ये भौतिक होता है। You go through so many different ideas. It's all mental concoction. तो अब ये सब कुछ मनगढ़ंत चीजें हैं। You know, like one time a devotee said to Srila Prabhupada, Srila Prabhupada, sometimes I'm thinking. तो प्रभुपाद जी को एक भक्त ने कहा, प्रभुपाद जी मैं कभी-कभी सोचता हूँ। Prabhupada said, don't do that. प्रभुपाद जी ने बोला ऐसा मत कीजिए। Because he knew it was mental speculation. प्रभुपाद जी समझ गए कि मनगढ़ंत बातें हैं। So Prabhupada, he was extremely tolerant. I remember one time on a morning walk in Vrindavan, एक बार वृंदावन में प्रातः के वॉक पे प्रभुपाद जी ने कहा, I stepped on Srila Prabhupada's heel. मैं प्रभुपाद जी के चरण के ऊपर पाँव दे दिया। Heel, right? एड़ी पे पाँव दे दिया। And he turned around, और वो मुड़े, he took his cane और उन्होंने अपना डंडा लिया, and pushed me. और उन्होंने धक्का दिया। And then, are you now satisfied? बोला अब आप संतुष्ट हो? I said, oh, I started crying. I said, oh, Srila Prabhupada, I feel so sorry. वो मैं रोने लग गया और मैंने बोला प्रभुपाद जी क्षमा कर दीजिए। He said, no, that's all. He was joking with me. और फिर प्रभुपाद जी हंसी मजाक कर I said, it's all right. It doesn't matter. बोला प्रभुपाद जी ने कहा ये चलता है। And then he said, when you go back to Germany, जब आप जर्मनी वापस आओगे, I said, tomorrow morning, Srila Prabhupada. उन्होंने कहा कि प्रभु जी ने कहा कि कल चले आओ। No, you can't do that, Prabhupada said. प्रभुपाद जी ने कहा नहीं जा सकता। Change your ticket. Change your ticket. आप अपने डेट मतलब दिन को बदल दीजिए। Stay at least 3 weeks. आप 3 हफ्ते रहिए। Just enjoy the spiritual atmosphere. आप इतना सुंदर वातावरण का आनंद प्राप्त कीजिए। That was a gift of God. These 3 weeks were a gift of God. ये भगवान का एक तरह का पुरस्कार था। Krishna's mercy. कृष्ण की कृपा। So in any case, Prabhupada was very tolerant. There's another example. किसी भी स्थिति में प्रभुपाद जी बहुत ही सहनशील थे। One of Prabhupada's godbrothers, एक बार प्रभुपाद जी के गुरु भाई, his name was Krishnadas. कृष्णदास Krishnadas Babaji. कृष्णदास बाबा जी। Anybody heard of him?
किसी ने सुना है कृष्णदास बाबा जी का नाम? He just had a little short, what is it called? Like a gamsha and a shadra and a bead bag, and that's it. बस उनके पास कृष्णदास बाबा जी के पास छोटा सा गमछा, ऊपर एक कपड़ा और चप्पल, He was very saintly, he was always chanting Hare Krishna. और वो हमेशा जप किया करता था। And he liked to cook for the devotees, और वो भक्तों के लिए भोग बनाना या प्रसाद बनाना, especially khichdi. वो खिचड़ी बनाने में बहुत आनंद आता And he put no spices into the khichdi, है। और खिचड़ी में कोई मसाले नहीं डालेंगे, not even salt, नमक भी नहीं डालते, nothing, pepper, nothing, nothing. कुछ भी नहीं डालते। And it was the most delicious, and he offered it to Krishna. It was the most delicious khichdi that devotees have eaten. तो वो जब भगवान को अर्पण कर दिया जाता था, इतना स्वादिष्ट खिचड़ी किसी ने कभी खाया नहीं था। And even after he left his body, और हालांकि उनके शरीर परित्याग करने के बाद भी the doctor came with his stethoscope. You know, a stethoscope? He was like, और डॉक्टर आए स्टेथोस्कोप से, उसको बोलते हैं जिससे हार्ट बीट चेक करते हैं उससे, to hear the heartbeat. तो उन्होंने हृदय की गति को सुनना चाहा। It's called a stethoscope. हाँ, स्टेथोस्कोप। And it was 2 hours after he said, listen to this. And he heard in his heart, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama. He was gone, but the Harinam went on. तो वो तो चले गए थे प्रार्थना करते, लेकिन उस शरीर में जहाँ स्टेथोस्कोप लगा रहे थे वहाँ से हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Even after he left his heart, हालांकि उन्होंने अपना शरीर त्याग कर दिया, the heart went on chanting लेकिन उनका हृदय चमके जा रहा था, because it was trained like that. ये बहुत ही अद्भुत था। So sometimes somebody insulted him. Somebody insulted him. एक बार की घटना, किसी ने उनका अपमान किया, And he said to, hey Krishna Das, sometimes you stay with ISKCON, sometimes you stay with this temple, sometimes you stay with that temple. उन्होंने कहा, हे कृष्णदास, कभी आप इस मंदिर के साथ रहते हो, कभी इस्कॉन में रहते हो, कभी किसी और संस्था में जाते हो। And he compared Krishna Das to something I don't want to compare. It was very bad. ये बहुत पुरानी बात है। And to a woman that goes from one man to another. To a woman that goes from one place to another. A woman that goes from one woman to another. One man to another. एक स्त्री जैसे एक जगह से दूसरे जगह पे विभिन्न लोगों के पास आ रही है। So when he heard that, he smiled. तो उन्होंने जब सुना, उन्होंने अपना एक मुस्कुराया। He said, oh, did it take you so long to find this out? बोले आप लोगों को इतना समय लगा ये जाने के? He took no offense. तो इन्होंने अपना He was insulted in a bad way, and he said, oh, it took you so long to find that out? बोले ये आप लोगों को पता लगा इतना समय लगा। So he was completely, and so in our history, Vaishnava history, even in the proper talk, the case of Jesus, he also tolerated crucifixion. तो हम वैष्णवों के अगर इतिहास में देखा जाए तो जीसस क्राइस्ट को भी पुलिस में चढ़ा गया है, ज़्यादा नहीं, उन्होंने सहा। He saw the people coming from 2 miles away, 3 miles away from the other hill with torches at night because he couldn't see anything. He was arrested तो उनको बंदी बना लिया गया at night. रात्रि में। He could see the people coming, the army coming from long distance with torches in the middle of night. वो Because रात्रि में देखे कि बहुत दूर से 2-3 मील से आर्मी वाले सब आ रहे थे उनको पकड़ने के लिए। he could have run away. वो भाग सकते थे। Even just hiding behind a house, nobody would have found him. अगर वो किसी घर के पीछे भी छुप जाते तो कोई उनको देख नहीं पाता। And he stayed लेकिन वो खड़े थे। because he knew it had to happen. क्योंकि उन्हें पता था ये होने वाला है। He could understand that is the will of God, क्योंकि ये भगवान की मर्जी है। that I be crucified. क्योंकि मेरे को बंदी क्या सूली पे चढ़ाना है। Because after all, just like Lord Krishna told or in the form of Shiva for Madhvacharya to start Mayavad philosophy, तो शंकराचार्य yeah, तो कृष्ण ने Shiva in the form of Shankaracharya, कृष्ण ने शिव जी को कहा शंकराचार्य के रूप पकड़ो ताकि आप मायावाद के सिद्धांतों को प्रकाश करो। because it was Krishna's will. क्योंकि कृष्ण की इच्छा थी। Why? क्यों? One should wonder, why should Mayavadi, the appearance of Mayavad philosophy be the will of Krishna?
क्यों मायावाद सिद्धांत का प्रकट करना क्यों कृष्ण की मर्जी होती है? Because there are many fools on this platform, in this material world who think that they're God. क्योंकि इस भौतिक संसार में बहुत लोग अपने को भगवान समझते हैं। So, if you think you're God, क्योंकि अगर आप सोचते हैं आप भगवान हो, there's a philosophy for that. तो उनके लिए There is a philosophy for that. इनके लिए ऐसा सिद्धांत भी है। It's like a trap. ये एक तरह का जाल है। Prabhupada says, Mayavad philosophy is the last snare, the last trap of Krishna. और मायावाद जो है ये आवरण आखिरी आवरण है कृष्ण। It's a trap. एक तरह का जाल है। Like a mouse trap. You put a nice mouse likes to eat जैसे चूहे को पकड़ने का हम लोग जाल a piece of cheese. और एक पीस चीज का डाल देते हैं, Put it on a mouse trap. उसको डाल देते हैं। The mouse comes and said, oh, very nice, sundar, sundar, sundar. He goes and grabs it and और चूहा ऐसे करके खाने जाता है और फिर पकड़ा जाता है it's a trap उस जाल में। or a snare. Snare is if you put, it's also a trap. You put a rope down like this, and behind it there's something, and the deer comes. And as soon as he goes towards that food, the snare closes, the rope closes, and he's strangled. स्नेल और स्नेल Snare. Snare. एक तरह का जाल है। You know what a snare is? स्नेल वो एक तरह का फंदा है, फंदा। That's a snare. एक तरह का फंदा है, इस तरह से जानवर पकड़ा जाए Why must there be a snare? तो एक तरह का फंदा है। Anybody's idea? Somebody knows the answer? किसी को ये उत्तर पता है? There must be a snare of Mayavadi to protect, Prabhupada says, quote unquote, to protect the purity of bhakti. तो ये फंदे से क्या होगा कि मायावाद लोग वहाँ पकड़े जाएंगे और शुद्ध भक्ति प्रकाशित होगी। Somebody may be worshipping even the deity in the temple, कोई हो सकता है भगवान का विग्रह को सेवा कर रहा हो या but भक्ति कर रहा deep हो। in his mind he's thinking, actually this I do just for the time being, ultimately I'm God myself. तो हो सकता है उसके मन में ऐसा सिद्धांत हो कि मैं अभी तो ये पूजा कर रहा हूँ लेकिन बाद में मैं भगवान बन जाऊंगा। That's Mayavadi philosophy. ये मायावादी सिद्धांत So है। he falls into this trap. तो आप इस जाल में फंसा हुए। There are many gurus we see on the internet, very famous even. और इंटरनेट में बहुत सारे ऐसे गुरु मिलेंगे जो कि बहुत They're talking about so many things. They're talking about so many things. वो फालतू की बहुत सारे बातें करते हैं। How to be healthy, how to sleep well, how to get rid of pain, everything except how to surrender to Krishna. They never talk about that. तो ये जो मनगढ़ गुरु है ये बहुत कुछ बोलेंगे, सिर्फ कृष्ण शरणागत कैसे होते हैं उसको छोड़कर सब कुछ बोलेंगे। Therefore, he fell himself into his trap and he leads other people who believe that they're God in the back of their mind also into this trap. तो जो उनके अनुयायी हैं ये इसी जाल में फंसा है। So in the same way, if you want to worship God, और अगर आप भगवान को पूजना चाहते हो but you love eating meat, और मांस खाना नहीं चाहते हो what is a trap? तो जाल क्या है? Christianity, Muslim religion, Jewish religion. तो ये जो जितना ही क्रिश्चियनिटी, मुस्लिम इत्यादि, You fall right into one of these traps. तो किसी न किसी जाल में फंसा हुआ है। You can worship God, but you can eat meat. और तो उनमें क्या है वो भगवान की पूजा भी करो और मांस भी Or खाओ। that you can worship God, but at the same time you think you are yourself God. और आप कृष्ण की पूजा भी करो और अपने भगवान की सेवा। Or when you want to have sex और अगर आपको मैथुन के प्रति इच्छा है and worship God. और भगवान की प्रार्थना करो। Mundane religion is like that. कुछ मनगढ़ंत रिलीजन ऐसे हैं। Mundane religion, you can have as much sex as you want. और मनगढ़ंत रिलीजन में आप जितना भी चाहे मैथुन करो। In one of mundane religions, it said that even if you die for God, then in your next life you can enjoy 70 virgins. और कुछ ऐसे भी मनगढ़ंत सिद्धांत बताए गए हैं। मरने के बाद आप 17
Kumaris. 17 कुमारी को भोग करो And boys also. और Boys also. Girls and boys. गर्ल्स एंड बॉयज Unlimited sex. तो अनलिमिटेड मेथड That is the idea of some of our worldly religions. और कुछ ऐसे मनगढ़ंत रिलीजन Eternal sex. शाश्वत मेथड If people want that, that's where they go. Here's a religion for you. और जैसा आपका मन रहेगा वैसे आपके लिए बहुत सारे व्यवस्थाएं की गई There's a religion for anything. In America, there's one boy, he came to us and said, Elvis loves you. Elvis Presley loves you. और एक बार एक अमेरिका से में एक व्यक्ति आया उन्हें बोला कि एल्विस प्रेस्ली आपको प्रेम करते हैं I said, why? बोला क्यों Because he said he's God. बोला क्योंकि उन्होंने कहा है वो भगवान है He said, we have a church of Elvis in America. और एक चर्च है वो एल्विस का In the same way, in Kerala, somebody was worshipped Donald Trump as a God. और किसी ने डोनाल्ड ट्रम्प को भी भगवान बोला The previous president of America. जो अमेरिका का पहले He was chanting his name. और राष्ट्रपति था उनका वो नाम जप कर Huh? Donald Trump, Donald Trump, 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 Donald, Donald. तो ऐसे ऐसे कोई नाम लेता You know, so these are the traps. You see, if somebody is a king, he surrounds his palace with all kinds of traps that nobody can get through to him. तो ये विभिन्न तरह के जाल हैं Mundane religion is one of Krishna's traps. और मनगढ़ंत जो रिलीजन है ये कृष्ण के बनाए गए जाल हैं And make no mistakes, ultimately mundane religion is inaugurated through a living entity under his jurisdiction. तो ये जो मनगढ़ंत जितने भी रिलीजन है ये भगवान की अध्यक्षता में मनुष्य के द्वारा ही बनाया गया है Simply to satisfy people's material desires. ताकि जीव के भौतिक आकांक्षाएं पूर्ण हो सके One should not think that these religions are not religions created without God. With God's hand. Krishna's hand is in there. कृष्ण के हाथ है इन सब में Krishna's hand is in everything. कृष्ण का हाथ सब में Now you have coronavirus plague. Coronavirus. अभी कोरोना जो वायरस आया है Who's behind this? इसके पीछे कौन है Krishna. कृष्ण 100%. 100% He has his fingers everywhere. उनके उंगलियां सब जगह His hands are everywhere. His ears are everywhere. In this way the Lord exists. उनके हाथ उनके कान वो सब जगह है भगवान सब में प्यार है So, therefore we have to understand, if somebody says, all right, let me be crucified so that Christianity can begin. The devotee goes along with that. He doesn't object. He says, all right, what can I do? You will be done. The will of God must be done even if it means that I be crucified. तो भगवान की इच्छा से सब कुछ होता है Haridas Thakur also, he was beaten over 21 marketplaces. हरिदास ठाकुर को 21 बाजारों में 22 बाजारों में पीटा गया It is not that Krishna's will was not there. ऐसा नहीं कि कृष्ण की मर्जी वहां नहीं थी He accepted it as God's mercy, and in fact, he didn't even feel the pain. और उन्होंने इसको कृष्ण की कृपा समझा तो और उनको कष्ट भी नहीं हुआ माता थे He couldn't die. वो मर नहीं सके So people said to the soldiers, told him, please die. तो उन्होंने कहा लोगों ने कहा आप मर जाइए And so they threw him into the Ganges. They threw him into the Ganges. तो उन्होंने उनको गंगा में फेंक दिया And after 5 miles, he walked out of the Ganges alive. और 5 दिन वो चले गए फिर वो जिंदा हो गए Right? Even Jesus, they thought he was dead. कहा गया कि जीसस की मृत्यु को प्राप्त They put him into the grave. उनको कब्र में डाल दिया गया था And after 3 days, he walked out alive. और 3 दिन बाद वो फिर से जगे चलने चलने This is Krishna's way of doing things. तो ये कृष्ण का तरीका है So we should understand that everything is, when Prabhupada left his body, हमको ये समझना है कि प्रभुपाद जी ने अपना शरीर त्याग किया I saw personally, मैंने देखा था अपनी आंखों से just before he said, last thing, he lifted up his hand like this. It was very peaceful. उनका हाथ इस तरह से था और वो शांत Maybe half an hour before he left. आधा घंटा पहले जब वो परित्याग किए And he said, took very long time, उन्होंने maybe बहुत समय लिया और फिर कहा
everything moving and non-moving, there's nothing but Krishna. उन्होंने कहा जो भी चीज चाहे वो हिल रहा हो डूब रहा हो चल अचल हो सब कृष्ण है। This consciousness is called Krishna consciousness. इस चेतना को कृष्ण भावना की चेतना है। And then he said, Hare Krishna, and he died. और उन्होंने हरे कृष्ण कहा और उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया। Who thinks like this at the time of death? कौन ऐसा कहता है मृत्यु के समय में? Pure devotee. एक सूर्य Yam yam vapi smaran bhavam tyadrati anti kalivalam. Wherever the mind is at the time of death, there you go. तो जैसा प्रभु ने श्लोक कहा ये नियम वापी सुरन भाव देते करते कलेवरम तो जिसकी जैसी मन की स्थिति है उसको वही जाना पड़ेगा। What do mundane people think before when they die? तो साधारण व्यक्ति क्या सोचता है मरने से पहले? Or last thought is a woman. और वो क्या सोचता है? स्त्री के बारे में सोचता है। Or he just about to die, he said paneer, and then he dies. और वो पनीर बोलने मर जाता है। Right? This is the last thoughts of people who are mundane, materialistic. तो भौतिक संसार के लोग ऐसे मन में स्थिर रहते हैं। But the pure devotees, their life is Krishna. और शुद्ध भक्तों का सब कुछ कृष्ण है। Then he said, Nityananda Prabhu went to preach Krishna consciousness to two roguish brothers, Jaga and Madha. तो कहते हैं नित्यानंद प्रभु जटाई माधाई को प्रचार करने गए And Nityananda tolerated, और नित्यानंद जी सहिष्णु थे कितने like Prabhupada tolerated, जैसे प्रभुपाद जी के साथ like Haridas Thakur tolerated. नित्यानंद ठाकुर सहे Great souls tolerate. तो हम उसको सहना They don't become upset even when they're insulted. और वैष्णव लोग कभी चाहे उनका अपमान भी क्यों ना वो सहते हैं। There's a verse, I don't think I can find it, the devotees of the Lord. तो एक श्लोक है मैं ढूंढने का प्रयास करता हूँ। Let me see if we can find it. Beautiful verse. बहुत अच्छा श्लोक है। One second. No result. Other is a mistake. The devotees of the Lord are so tolerant. And even if they're beaten, even if they're cheated, even if they're insulted, they never revenge themselves. That is the verse. तो इसमें ये जो श्लोक है श्लोक का भावार्थ इस प्रकार है अगर किसी को मारा भी जाए कष्ट भी प्रदान किया जाए और विभिन्न तरह से उसको यातनाएं दिया जाए लेकिन वो कभी भी सहता रहता है। More tolerant than a tree. और एक वृक्ष से भी ज्यादा सहनशील होना। Even when somebody makes a mistake, we become agitated and try to immediately correct him. और जब भी कोई गलती कर रहा है हम संग से उसको समझाते हैं गलती हो Instead of tolerating and telling him in private later, at a later time. और इससे बेहतर है कि हम उसे अकेले में बाद में समझा सकें। Not in front of everybody else to insult him. Not in front of everybody else. और दूसरे के सामने कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। Like you see, yesterday I gave the example a couple of days ago, you see Brahma, a young boy goes on the to the shower, toilet, and he takes his bead bag with him. और एक यह युवा बालक जब अपना जपमाला लेकर टॉयलेट में चला गया। What is the bad thing? You say, I saw you took the bead bag to the toilet. Is that a good way? ये मैं बोलूँगी अरे तुमने टॉयलेट में अपना बीड बैग ले गया ये सही बात है। Just wait till there's privacy and tell him later in a gentle way, by the way. तो इससे बेहतर है कि आप समय का प्रतीक्षा कीजिए जब वो अकेला हो तब उसे समझाइए। Otherwise you embarrass him in front of everybody. नहीं तो आप उसको कष्ट प्रदान कर देंगे सबके सामने। So devotees have to be tolerant. Even if they see people do this and that, they're tolerant and they try to find some way to tell them what is right and what is wrong. तो भक्तों को बहुत सहनशील होना चाहिए और सही समय देखकर सब कुछ करना चाहिए। Tolerance is an important quality. Taror api saishuna, more tolerant than a tree. और वृक्ष से भी ज्यादा सहनशील होना चाहिए। And people cannot tolerate. और लोग सह नहीं पाते। You know, like I give you an example. We had a court case in Ireland. मैं उदाहरण देता हूँ एक वक्त है आयरलैंड में। One devotee was arrested in the middle of class. और एक वक्त खड़ा हुआ है No, क्लास में।
not in class, in Mangala. मंगल आरती में Police came and arrested him. पुलिस ने आके ऐसे पकड़ लिया। And I said, what are you doing? He said, we have to take him, the judge is looking for him. और बोला हमें इसको लेके जाना है जज की कोर्ट में। We have to arrest him. He will be in court tomorrow. He will call you. तो उनको कोर्ट में लेकर जाना है। So the devotee, he called me and said, yes, I smuggled a little bit of hashish. This much, not much. तो उन्होंने बोला मैं इतना सा कुछ नशे का वस्तु खरीदा। My lawyer told me that I should come for the court case and speak to the judge. He called, hello, Prithu Das. My lawyer said that you should please come tomorrow so that you can speak to the judge. तो उन्होंने मेरे लॉयर ने कहा कि आप कल आ जाइए ताकि हम जज से बात कर सकें। So I went. तो मैं गया And the judge, many people in the courtroom, 50, 60, 100 people waiting for the court case, for their court case. The judge said, Mr. Prithu Das, Peter Brinkman, are you here? I said, yes. You want to talk to me? I said, yes. Talk. तो उन्होंने कहा पृथु दास कौन है? मैं कहा मैं हूँ। तुम मुझसे बात करना चाहते हो? कहा। And he showed very practically how people cannot tolerate. उन्होंने दिखाया कि क्यों लोग सहन क्यों नहीं पाते हैं। So I asked him, I said, Your Honor, the jail is there. I understand he smuggled some drugs, but jail is there to correct people. Is that right or wrong? तो मैंने उनको पूछा कि जेल जो जगह है ये सुधारालय है, क्या सही है गलत है? He said, that's right. तो उन्होंने कहा हाँ ये सही I है। said, he's already corrected. तो बोले इसको हमने ऑलरेडी सुधार दिया है। I said, why is that? बोले कि ऐसे कैसे? He said, we don't take any drugs, no, even not tea, coffee, alcohol, cigarettes, nothing, no drugs. तो हम लोग नो ड्रग्स लेते हैं, मतलब हम लोग कोई नशा नहीं करते, चाहे वो चाय हो, कॉफी हो, नशे की वस्तु कुछ नहीं लेते। We are vegetarians, we don't kill any animals, no meat, हम लोग कोई जानवर नहीं मारते मांस खाने के लिए, no meat, no fish, no eggs, ना मछली खाते ना अंडा खाते, no gambling. हम लोग कोई जुआ नहीं खेलते हैं, And I said, and no sex except in marriage. और हम लोग सिर्फ कोई सेक्स नहीं करते हैं, The judge said, no. शादी के बिना। The judge said, like this here, no sex. तो जज इस तरह से देखने लगे, I said, only in married life and for producing children. और सिर्फ पुत्र प्रकट करने के लिए, वो भी शादी करने। The judge shook his head and said, that is worse than hell. Take him with you. He is sufficiently punished. तो वो बोलता है ये नर्क से भी बुरा है, इसको लेकर जाओ तुम्हारे साथ ही रखो अपने पास। Because the judge could not imagine to tolerate that state. और क्योंकि ये सहना बहुत बड़ा है। Could not imagine a life that to tolerate that there is no sex. तो So Haridas Thakur, all the great souls like Nityananda, they are all tolerated. तो जितने भी महात्मा हैं तो नित्यानंद सबके सहना। So Narada Muni, when he was attacked like this by Prajapati Daksha, he tolerated. तो नारद मुनि भी यहाँ देख सकते हैं दक्ष के साथ देने पर भी उन्होंने सहा। And it says here, he expected that after delivering his course, Dakshi would be satisfied and free from anger and would repent his misbehavior and become a Vaishnava. That is stated here. तो नारद मुनि उनको सहा इसलिए कि दक्ष को एक मौका मिले ताकि उनको बाद में पश्चाताप करे और वैष्णव बन जाए। Very important that if he committed an offense, ये बहुत सही है कि जब हम कोई अपराध करते हैं तो if we do something wrong, आज हम गलती करते हैं तो we have to, number one, realize that we do something wrong. पहला तो हमें समझना है कि हमने गलत किया है। Next step, we have to feel sorry that we make a mistake. तो फिर हमें दुखी भी होना चाहिए कि हमसे गलती हुआ। Next thing is we have to repair. Number three, we have to repair the mistake. और तीसरा है हमें उसको रिपेयर करना है। And then we can sing and dance in Kirtan Haribol. और फिर हम कीर्तन भी कर सकते हैं हरि बोल रही है। Like for example, I take your money. हो सकता है मैंने आपका पैसा ले लिया। I steal money from you. मैं ले लेता हूँ। And you find out about it. आप पता चल जाएगा आपको।
You realized that it was not good, so I said, I realized it was not very good. तो जब मैं समझता हूँ कि गलत बात था, But now let's sing and dance in kirtan. और फिर Now let us sing and dance in kirtan. चलो अभी कीर्तन में नाचते हैं। I feel sorry, I know it was not good, feel sorry, and now let's sing and dance. तो मैं दुखी हूँ, अभी चलो कीर्तन करते हैं। Is that possible? ये क्या संभव है? There's one step missing. एक स्टेप नहीं है यहाँ पे। First, realize it. Second, feel remorse. Third, repair it. तो ये तीन जो कार्य है, पहला समझिए कि आपसे गलती हुआ है, दूसरा दुखी हुई है, तीसरा उसको You tell him, you say, it's nice to dance, but first give me your money, then we can dance, right? तो नित्य कीर्तन कीजिए, लेकिन पहले पैसा दे दीजिए। So it's very important that if you make a mistake or I make a mistake, A, we have to realize it was wrong. B, we have to feel sorry about it. C, we have to repair it. And D, then we can sing and dance in kirtan, not otherwise. तो ये जो चार स्थिति है, पहला समझना कि गलती क्या है, दूसरा दुखी होना है उसमें, तीसरा डिपेंड करता है, और चौथा फिर आप नित्य कीर्तन कीजिए। If you make a mistake, if you did something wrong, you cannot say, well, that's just the past. Let's sing and dance. तो ऐसा नहीं जिसने गलती किया चलो सब भूल जाओ, नित्य कीर्तन करते हैं। It's not possible. You have to undergo the 4 steps. तो ये चार पथ अतिक्रमण करना होगा। Just like Narada, he expected after the delivery of his curse, Daksha, satisfied and freed from anger, would repent his misbehavior and thus get a chance to become a Vaishnava and be delivered. तो दारुणी में भी यहाँ पे साहा कि 10 कब समझेंगे कि उनसे गलती हुआ है, फिर पश्चाताप करेंगे और फिर That did not happen so easy. ये इतना आसान नहीं है। As we knew later, he had to take the head of a goat because he was insulting Shiva. एक बार उन्होंने शिव जी का अपमान किया था, उन्होंने एक बकरे का गला काटा। But when he had the head of a goat, then he could understand. He started praising Krishna with exalted prayers. तो तब जब उनको बकरे का गला प्राप्त हुआ, तब उनको पता चला कि उनसे क्या गलती हुई। So even if somebody has the head of a goat, he can praise Krishna. और कृष्ण का अगर किसी के पास बकरे का भी शरीर मतलब गला ना हो, तो फिर कृष्ण का आश्चर्य। So in the same way, if somebody is a buffalo head, like most of us, हो सकता है किसी का भैंस का गला हो, हमारे जैसा। we can chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. And in this way satisfy Krishna and Srila Prabhupada. तो हम इस तरह से हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे का जाप कर सकते हैं, कृष्ण को और प्रभु जी को सकते हैं। Somebody may say, but I'm not a disciple of Prabhupada. I was born after that. I'm a second generation devotee. तो कोई ऐसा भी कह सकता है, मैं प्रभु जी के समय में जन्म नहीं लिया था, मैं उनके बाद जन्म लिया और मैं सेकंड जनरेशन का भक्त हूँ। Prabhupada is a spiritual master of everyone. और प्रभु जी आध्यात्मिक गुरु हैं सबके। And I want to tell you a story who describes that. तो मैं कहानी बताऊंगा जो इस बतलाता है। There was a young devotee in Russia. एक रशिया में एक युवा भक्त थे। He was put into prison by the government, by the KGB, by the secret police. तो वहाँ पे रशिया में केजीबी ने एक वो डाल दिए थे। Because this girl, she was distributing Prabhupada's books. क्योंकि प्रभु जी ग्रंथ का वितरण कर रहे थे। So in jail, she started talking to people about Krishna. तो आप जेल में कृष्ण के बारे में बोलने लगे सबको। And she wouldn't stop. The prison guard said, you can't do that. और फिर जेल में कहा कि आप ऐसा कार्य नहीं कर सकते हो। The secret police came and said, you can't do that. और पुलिस भी आया, अगर आपकी प्रचार नहीं कर सकते जेल में, We'll punish you. हम आपको और दंड देंगे। She would keep convincing others of Krishna. और फिर वो कृष्ण के बारे में सबको बतलाते थे। So then the KGB had a very bad trick. केजीबी ने बहुत खराब कार्य किया। They bought a black magic person, a witch. तो एक चुड़ैल को लेकर आए, चुड़ैल मिलते हैं। What do you call it? Pichaka? काला Pichaka? जादू वाले माता जी को Pichaka, or what is it called? Witch? बुलाया। Pichaka? जिनको काला जादू आता है। They brought a witch. And they told the witch, go into her body. और उसको कहा गया तुम उसके शरीर में प्रवेश कर जाओ। And so this witch, she had this power. She went into the body. The devotee could feel it, that there's something in her, stronger and stronger and stronger and stronger. तो वो लड़की को लग रहा है कि उसके शरीर में प्रवेश कर चुका है, वो बहुत शक्तिशाली है। And all of a sudden she came out of the body screaming,
और कुछ ही देर में बहुत जोर से भागते हुए तुरंत भाग गई बाहर। And she said, the KGB said, what are you doing? Why are you running away? केजीबी बोल रहे हैं, रुक जा तू कहाँ भाग रही है? Said, an old man appeared with his cane and he was beating me and beating me. और एक वृद्ध व्यक्ति डंडा लेकर मुझे पीट रहे थे। This was Srila Prabhupada. वो प्रभुपाद जी। Srila Prabhupada ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Go Premananda Hari. Wow, very powerful. बहुत शक्तिशाली। So many examples of इतने Prabhupada सारे उदाहरण who came into our life. जो हमारे जीवन में आए। Like yesterday, my favorite story that when Chandramoli Maharaj was reading Bhagavatam or Krishna books, then all of a sudden Prabhupada came and continued. He's reading. Thus the daughters were saved from Narada Muni. Prabhupada continued. 10 of the daughters were given marriage to Dharma. Prabhupada read for 20 minutes. तो ये चंद्रमौली स्वामी के साथ ये हुआ था कि जब वो पाठ करते करते रुक गए, लेकिन तब भी प्रभुपाद जी 20 मिनट तक प्रभुपाद जी बोलते रहे और सब सुनते रहे। It just happened last year. और ये ज्यादा दूर नहीं, 20 में हुआ। He reasons Ilu think that Vaishnava dies while he is living still in sound. तो ये बात है कि वैष्णव कोई मरते नहीं है। Prabhupada said, I'm in his books. प्रभुपाद जी कहते मैं ग्रंथों में हूँ। And he proved it और उन्होंने कहा ये to Chandramoli Swami and to the whole world. To Chandramoli Swami चंद्रमौली महाराज and to the whole world. उनके माध्यम से उन्होंने पूरे विश्व को बताया। I asked him, I found out about this story, so I asked him personally, I wrote him a letter. Is that true? He said, yes, it happened. Whole atmosphere changed and Prabhupada started reading. I said, can I talk about this publicly? He said, yes, you should. It's तो good. प्रभु जी को जब पता चला तो उन्होंने चंद्रमौली महाराज को चिट्ठी लिखा कि क्या सत्य बात है? चंद्रमौली महाराज ने कहा हाँ। तो प्रभु जी ने कहा क्या मैं पूरे संसार को बता सकता हूँ? उन्होंने कहा He said it's important for devotees to know that when they read Prabhupada's books, Prabhupada is there. तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जब कोई प्रभुपाद जी ग्रंथ पढ़ता है तो प्रभुपाद जी उनके साथ हैं। Srila Prabhupada ki jai. So we are late. One question. एक प्रश्न You always ask. Yeah, as you said, behind Corona, Krishna's hand is there. Behind Corona, Krishna's hand is there. So, like, why? What is the reason that Corona is there and most of the people are having that fear and people are getting affected? And second, is the reason that people are thinking Corona is here, so the Corona is increasing because people are thinking kind of coronavirus and then it's spreading. Ignorance. I need somebody to repeat. I'm saying you were saying कि in behind Corona also Krishna's hand is there. Yeah. And what is the reason is there behind? And why Krishna had spreading this Corona? What is the To reason? punish the demons. To punish the demons. तो इनका प्रश्न था कि कोरोना में भगवान का जब कहते हैं सब में भगवान का हाथ है, कोरोना में भगवान का हाथ है। This- तो मुझे उत्तर दिया कि हाँ, क्यों? क्योंकि असुरों को दंड देने के लिए। The present civilization is completely demonic. क्योंकि आज का जितना भी सिविलाइजेशन या सिविलाइजेशन का बोले, They're killing millions. नहीं आखिर तो वो हो गया। They're creating, आज का समाज पूरा आसुर। they're creating one war after another एक के बाद एक चलता ही रहेगा। to make money on war. क्योंकि युद्ध होता रहेगा तो पैसा कमाते रहेंगे। Weapons is a huge business. ये सबसे बड़ा बिजनेस, बहुत बड़ा बिजनेस है। ये Most exports from Germany are weapons. ये weapon को क्या बोलते हैं? हथियार का ये जो तो ये तो हथियार ये बहुत महंगा चीज़ है। One German general I saw on the internet, he was asked, एक बार एक इंटरव्यू में देखा एक जर्मन जनरल, how come we are selling tanks all over the world? कैसे आप सालों जगत में टैंक बेचे लोग? In fact, even Russia bought some tanks from रशिया Germany. ने भी कुछ टैंक खरीदे थे। He said one should not say that loudly, और एक को बहुत जोर से ये सब नहीं बोलना चाहिए। but we again have the best tanks in the world. लेकिन ये जान के रखिए कि जर्मनी के पास सबसे अच्छा टैंक है विश्व में। Germans are never tired of building weapons, planes, rockets, etc. और रॉकेट इत्यादि भी बहुत सारी
huge business. The world is being destroyed. The oceans are destroyed. The rivers are destroyed. The land is destroyed. The air is destroyed. The food is destroyed. Your bodies are destroyed by the demonic demons in this world. तो असुरों के द्वारा जल, वायु, पृथ्वी सब कुछ नाश कर देगा। Right? Yes. Is it true that the air is destroyed? Yes. The rivers? ये The, सत्य बात है कि पूरा हवा, वायु, जल, पाना, मनुष्य सब कुछ नष्ट कर देंगे। the ocean? दो जलाशय को, The food? दो खाने को, And what are we eating? हम खा क्या रहे हैं? There's so many poisons inside. जहर खा रहे हैं। So, and we can kill millions of animals. How many children are aborted, killed in the womb every year? हम लोग इतना सब बच्चों को मार दे रहे हैं गर्भ में। 1,000 trillion children are killed in the womb every year. 1,000 ट्रिलियन बच्चों को मार दिया जा रहा है गर्भ में। How long एक साल Krishna? में। I'm surprised how Krishna is so patient. मैं बहुत ही अचंभित हूँ क्योंकि कृष्ण इतना सह कैसे है। So many animals are killed. इतने सारे जानवरों को मारा जा रहा है। So, this is how Krishna acts. There will be war, there will be pests like this one. This is all Krishna's hands. इसीलिए कृष्ण भी इस तरह के कार्य करते हैं। This world cannot go on the way it is going on. It must finish. तो ये जो विश्व इस तरह से नहीं चल सकता है, सब रुकना चाहिए। Even Bhaktisiddhanta said 100 years ago, the West must be destroyed. और भक्ति सरस्वती महाराज ने कहते हैं पश्चिम का जो पश्चिम को रुकना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा। Because the evil influence of the West destroys everything. The evil influence of the West destroys the whole world. तो जो भयंकर इन्फ्लुएंस है पश्चिमी देशों का, ये हमारे सबको बर्बाद करती है। Even the Muslim invasions in India, they didn't come from the East. और जो मुस्लिम लोग भी आए वो पश्चिम से ही आए, They ये पूर्व से नहीं आए, They came from the West. सब वेस्ट से आए, मतलब पश्चिम से आए। Bollywood is not coming from Japan. और Bollywood is not coming और from बॉलीवुड भी जापान से नहीं आया, वो भी पश्चिम से आया। or from Fiji. It comes from the West. और ये भी वेस्ट से आया, पश्चिम से। You see, all these things, the destruction of the planet comes from the West, ultimately. सब कुछ पश्चिम से आना है। It destroys every civilization, it destroys every resource, it destroys the world, this war and pestilence. और पूरा सब कुछ नष्ट कर देता है, संसार के सब चीजों को। Therefore, time I am destroyer of the worlds. Krishna destroys. भगवान कहते भगवद गीता में कि मैं समय सबको नष्ट कर दूंगा। That's your answer right there. Krishna says, time I am destroyer of the worlds. तो आपको उत्तर मिल गया होगा, समय है भगवान सब कुछ नष्ट कर दूंगा। Srila Prabhupada ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Hare Krishna, Krishna Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare Hare, Prabhupada, Prabhupada. We are very fortunate that we can live in a Hare Krishna temple. तो हम सब बहुत भाग्यशाली हैं हम सब कि हम सब हरे कृष्ण मंदिर में निवास करते How many people can live in a Hare Krishna temple? Not many. हैं। कितने लोग हैं जो हरे कृष्ण मंदिर में रह सकते हैं? ज्यादा नहीं। Krishna's special mercy. ये कृष्ण की अंतरंगिक और बहुत ही स्पेशल मर्सी। Srila Prabhupada ki jai. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम। तो हम बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु को जिन्होंने अपना इतना बहुमूल्य समय और इतना बहुमूल्य एक्सपीरियंस हम सबके साथ शेयर किया। तो हम उनको धन्यवाद देते हुए हरे कृष्ण भावना और घोष करेंगे। हरे कृष्णा हरे राम हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो प्रभु के प्रभु महाराज के और भक्तजन के। So we are very extra fortunate for this week that Prithu Prabhu is continuously delivering the lectures on Srimad Bhagavatam for all the devotees of Bhagavad here. Unfortunately, all the conventional devotees could not take this privilege, still avail this privilege because of the pandemic. We don't consider them sinful, but the situation is like that they are not able to come to this place. But from the core of our heart, we really thank Prithu Prabhu, who is the oldest Srila Prabhupada disciple, and he took out of his second schedule to come to Kharkar, the new temple which is in the making. I'm sure by his continuous merciful attitude to all the devotees of Kharkar will be progressing very leaps and bounds, and we hope and pray at the dust of his feet keep on showering this nectar all the time so that we can progress and serve Prabhupada, the mood which you have inherited from him. Give in this sense, Srila Prabhupada, so that we also inherit this mood of service. Prithu Prabhu is at the age of 75 and he continues to deliver the lectures and inspire us. And this is only because he is compassionate. At the core, when you are compassionate, then you can do this. Otherwise, as a materialistic person at the age of 65, he says that now I let me retire. But Srila Prabhupada's disciples never tire. They keep on delivering and delivering the essence of the Srimad Bhagavatam with their own anecdotes and Srila Prabhupada's anecdotes, so that we remain such charge to carry out the legacy which is coming from the past, many hundreds and hundreds and hundreds of years, thousands of years. And this Kali-yuga is rapidly advancing, and we need this nectar all the time. And as Prithu Prabhu said, fortunate are those who stay in the temple to execute devotional service for the pleasure of Guru and Krishna. So indeed, those devotees who are executing devotional service in the temples, they are very, very blessed. And to make them more blessed, we see traveling sadhus blessing us and making us very, very fortunate. Because it is the Sangha, it is the association which keeps us alive and which makes us to move forward and forward and forward. The modern technology is, you must be hearing, the modern technology is that the planes are fueled in the air. The modern technology is that even the supersonic jets are fueled in the air, or the big planes are fueled. So how do we get our fuel? This is how we get the fuel. When the big sail
saintly people come and visit to us, and we get to hear. Hearing is itself very, very powerful. In spiritual life, hearing is very powerful. And from a right source. Of course, we lend, in the Middle East, people lend their ears to so many nonsense things, but the devotees lend the ear to the transcendental subject matter coming from the mouth of great realized souls like Prabhu. And we go down our head to Prithu Prabhu's lotus feet and please and see that we keep on developing a taste of hearing. And sometimes people would say that how do you become immortal? When you develop complete taste of hearing, only nectar from the Srimad Bhagavatam, from the Vaishnavas, and that is the immortality for the jiva, when he will segregate water and the milk, just like the swan does. And the devotees are like swans. They separate material activities and then only inherit spiritual activities. And that's our fortune. And this fortune has arisen because the moonlight, Prithu Prabhu came to this place, and we are really, really honored. Thank you. Prabhupada ji.